Hello students, this is Shilpa Mahajan, your biology teacher. As you all know that due to coronavirus, schools are closed. So I am giving you an online session for your first chapter of biology, that is crop production and management. So as you all know that agriculture is the main occupation of Indian. So first of all you should know what do you mean by agriculture. Agriculture is the production of crops along with animal rearing. In this particular session, green revolution is a large increase in crop production by the use of fertilizers, pesticides and good quality crops. Green revolution is an era when the things have started changing in this particular agricultural field. Things are improving. जो क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी हार्म हो रहे थे वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगी थी इस एरा से, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग. फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स का यूज़ स्टार्ट हो गया था. एंड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ M.S. स्वामीनाथन. ही हैज़ स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स. देन डू यू नो what is crop? Crop is the same type of plants when grown on a large scale. Example, wheat, rice, pulses, gram, etc. As you can see the pictures also, in this particular picture they are showing a crop. जब हम एक ही टाइप के plants एक particular area में या land में grow करते हैं एक साथ, then it is known as crop. Then there are three different types of crops. The first one is Rabi crop, which is also known as winter crop. Rabi crop is sown in winter and harvested in spring season. Example, wheat, mustard, barley, etc. Then the next type of crop is Kharif crop, which is also known as summer crop, sown in monsoon season and harvested in winter. Example, rice, cotton, sugarcane, etc. These crops, they need actually more water. That is why they are sown in monsoon season. Then the third type of crop is Zaid crop. They are mainly grown from March to June. For example, melon, watermelon, cucumber, etc. Then come to the steps of crop production. There are many steps of crop production which I am going to explain you one by one in a sequential order. The first step of crop production is preparation of soil. In this particular process, soil is being prepared by the farmers properly before sowing the seeds. And so they have to loosen the soil and tilling it. जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो चीज़ें हैं उसके अंदर से सॉइल को लूज़ करना, सो दैट इट कैन बी एरेटेड प्रॉपरली, पानी उसके अंदर प्रॉपर जाए, एयर प्रॉपरली अंदर जाए, रूट्स तक पहुँचे. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़ दे लूजन द सॉइल सो दैट अर्थवॉर्म स्टार्ट ग्रोइंग. अर्थवॉर्म्स उसमें पहुँचे, टनल्स बनाए, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट अर्थवॉर्म्स आर द फार्मर्स फ्रेंड, सो दे डू देयर वर्क. Then the next step is sowing of seeds. Seeds, healthy seeds specifically, healthy seeds should be sown in the soil. And this sowing of seeds is done in two ways, that is broadcasting method or seed drill. Broadcasting is a traditional method which is generally used by the farmers. In this what they do, वो simply अपने हाथों से seeds को फेंकते जाते हैं for sowing, है ना. एंड इन सीड ड्रिल मेथड देयर इज़ अ मशीन नोन एज सीड ड्रिल. उसमें अलग अलग शेफ्ट्स होते हैं एक सर्टेन दूरी पे, और इसमें ऑटोमेटिकली सीड्स एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन डेप्थ में गिरते रहते हैं. जब सीड्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक डेप्थ में गिरते रहते हैं तो इट इज़ कवर्ड बाय द सॉइल ऑल्सो. वो अपने आप सॉइल से कवर होते जाते हैं ताकि कोई भी बर्ड या एनिमल उन सीड्स को डैमेज ना कर सके. तो इससे क्या होता है, सीड्स बहुत, वो जो क्रॉप ग्रो होती है वो बहुत प्रॉपरली ग्रो होती है. they need sufficient space for sunlight, and their roots also get sufficient space for the growth. So this is the seed drill method which is generally very popular nowadays. Then the next is manure and fertilizers. Obviously plants or crop, they need manure and fertilizer as their food so that they will get proper nutrient for their growth. So manuring is an organic, basically it is organic product which is made from the waste of plants and
animals. And fertilizers are completely inorganic or chemical based product which is made in factories. Manure, they make the soil composition, soil texture better. सॉइल को एनरिच करता है, ह्यूमस बनाता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है. एंड फर्टिलाइजर्स, दे जनरली प्रोवाइड 3 न्यूट्रिएंट्स, दैट इज पोटेशियम, नाइट्रोजन and phosphorus, which we also called as NPK. N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium, which are very, very useful for the plants, for the crops. Then manure, generally they used in a large quantity. They can be used क्योंकि they are not at all harmful for the crop. But fertilizers has to be used in a limited quantity. Then manure, they basically cannot be transported from one place to another because they are quite bulky. But fertilizers can be transported from one place to another because they are sold in packets, so it is easy to transport them. So there are these important differences between manure and fertilizer, which are also given in your book, so please go through it. Then the next is irrigation. Irrigation means supplying water to the crop for their growth. So there are 2 ways, traditional and modern methods. So wells, tube wells and canals are the methods which are used generally by the farmers. So as you all know that in wells and tube wells are very common method. In canal system also छोटे छोटे canals बना दिए जाते हैं और वहाँ से they supply water and they reach to each and every corner of the field. ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है? ड्रिप इरीगेशन मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इज गिवन टू द क्रॉप्स डायरेक्टली टू देयर रूट्स, एंड स्प्रिंकलर सिस्टम इज जस्ट लाइक अ फाउंटेन which is set up in the middle of the land, and from there it's sprinkled and reached to each and every part of the field. तो ये जो दोनों मेथड्स हैं, दिस आर लेटेस्ट मेथड विच इज़ यूज टू सेव द वाटर. जनरली जो ऊपर के तीनों मेथड्स हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स, इनमें क्या होता है, पानी भर जाता है खेतों में. तो जहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं पोर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, जिसकी वजह से एरेशन की प्रॉब्लम आती है. जबकि ये प्रॉब्लम ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स में नहीं आती बिकॉज दे जनरली सेव द वाटर. और ये मॉडर्न मेथड्स हैं, ये ज़्यादा बेटर मेथड्स हैं और इनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती कि वाटर क्लॉगिंग हो रही है या कुछ भी. देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. नाउ क्रॉप्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय पेस्ट एंड वीड्स. नाउ व्हाट आर पेस्ट? Pests are the living organisms which can damage the crops that you all know, like rodents, like fungus, like this thing, bacteria, viruses. These are all the kind of pests. ठीक है. And weeds are the unwanted plants which grow along with the main crops. जैसे कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो बथुआ अपने आप से ग्रो हो जाता है, क्रिजेंथेमम, गाजर घास. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो मेन क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो हो जाती है और ये इतनी फास्ट ग्रो होती है दैट दे do not allow the main crop to take the nutrient whatever they need, क्योंकि वो ज़्यादातर उनसे compete करके सनलाइट, वाटर, सब कुछ वो उनका ले लेते हैं. So that is why weeds and pests are both harmful for the grass. So we have to protect them by using pesticides. तो pesticides का इस्तेमाल करके we can kill them and we can save our crop. Then next is harvesting of crop. Finally, when everything is done, it's a time to harvest the crop, to cut down the crop. Then threshing of crop. Threshing means separation of grains from stalk. Grains को, दानों को stalk से अलग करना, which we can do by hit them. ठीक है, उनको hit करके दानों को अलग से निकाल लेते हैं. And then final and the last step is storage of grain. We have to store the grains in silos, storage tanks जो भी वो clean होने चाहिए, और पहले उनको अच्छे से हीट करके सनलाइट में, ताकि उनमें जितना ही मॉइस्चर है वो निकल जाए. आफ्टर दैट उनको शेड में कूल करके उन ग्रेन्स को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में भर देते हैं और फाइनली उनको ग्रेनरीज में रखा जाता है और वहाँ से उनको मार्केट में सेल करने के लिए इट इज़ रेडी नाउ. सो दिस इज़ द वे हाउ द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बीइंग टेक्स प्लेस. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर आई हैव गिवन यू इन शॉर्ट, बट यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर थॉरली फ्रॉम योर बुक and please go through the question answers also. Okay, thank you.